Good evening, Anjali. So, had your tea and all? Had your evening snacks? Nice. So, students who are joining from YouTube, good evening. How are you all? Harshada, good evening. Very nice. Okay, students. So, yeah. Just a second. Welcome to today's session. Yes, my name is Samanvit, your physics faculty. And yeah, students, happy Women's Day. Every women, every girl present over here, happy Women's Day. Yes, I hope you find all the happiness in your life. You have a successful life. Okay. And yeah, to the boys too. So we'll be let's say sharing a day soon, hopefully. Happy Women's Day soon. Okay. Don't get demotivated and all. Yes. Okay. In the meantime, students, as students are joining, let's do one thing. Let's quickly take a technical check and let me know is my audio, is my video, everything is visible or not. Okay. Let me know, students. Is it good? Uh, Let me do one thing. I'm launching the technical poll. Please let me know, students, using the technical poll. Is my audio, is my video, everything is audible? Is my presentation visible or not? Please, students. Yes. Yes. Okay. All set. Very nice. Sweetie, good evening. Happy Women's Day. No problem. Yes. Okay. So everyone is answering. And yeah, uh, Ganesh, good evening. Okay. Oh, new students are arriving. Swapnil, Anjali, Omkar, Ganesh, welcome to today's session. Davangere students. Mridula, welcome to today's session. Pramod, Sahana, Shailesh, Sakshi, Sanjana. Yes. So I'll give a brief introduction to the students who are joining today. Okay. Myself, Samanvit. I'm your physics faculty from Avantifellows. Okay. I've been teaching here for past few months. Okay. One of the students is saying that my audio is not clear. Can I know? Can I know? Is everything clear or not? Please let me know using the chat box too. Hello, YouTube students. Good evening. Is everything clear? Okay. There is no disturbance like yesterday, right? There is no audio disturbance. Okay, nice. Okay, audio good. Okay, clear. No disturbance. Okay. Thank you, Path. So yeah, everyone has to answer the technical check. Okay. If I get more than 75 percentage, then I'll tell that okay, everything is fine. Okay, just a second. Okay, so let's do one thing. Let's start our session. So in the meantime, during the classes, if you feel anything should be conveyed, like the technical issues or any doubts, you can stop me at that point. Okay. Now I'm ending the poll. Now, students, so whoever is present, whoever the every women's out there, happy Women's Day. Okay. I hope you had a wonderful day, and I hope everyone has wished you too. Okay. Now, coming to what we were talking about, students who are joining for the class for the first time. Telugu students, good evening. Okay, thank you. Payakar students, we were talking about work, power, and energy. Okay, so students, we have already talked about Bhavana. Okay, thank you. Welcome. Okay. Okay, so if I'm wishing, then you need to give me sweets also. Okay, so whenever we meet, I expect you to provide me with me some sweet. Okay. So students, we have already talked about work and already we have related work with energy. Okay. So this is for the new students. In yesterday's class, we were talking about certain things that we will be discussing, and due to some technical errors, the class was not that smooth. So today we'll make sure that every concept is understood by everyone. Okay. Is it good? Is it good to go? Nice. Okay. Is it good to go? Let me know. Let me know in the chat. Are you ready for today's class? Very nice, Smitty. Yadgiri students, good evening. So yeah, every student out there, good evening. Now, nice. Okay, Sumant, very nice. Now,
talking about what we are going to talk, like see today or understand today. The thing is, let's say the class flow is something like this. Okay, let us quickly recall the content that is required to understand today's concept. Then we'll be talking about types of equilibrium. Yesterday we have talked about it, but today we'll go in a deep dive, in a proper, in a smooth way. Okay. Then we'll be talking about stable, unstable, and neutral equilibrium. As we were talking about types of equilibrium, in types of equilibrium, there are stable, unstable, and neutral equilibrium. Okay. So we'll be going and seeing what are the conditions that is required to call equilibrium a stable equilibrium. Yes. What are the conditions required to call them a stable, unstable, neutral equilibrium? Okay. Then we'll be solving certain numericals. Obviously, right? We are going to, like, you guys are going to write competitive exams. So you need to make sure that you are ready for it. Okay. Then that's all. That will be the summary of today's session. Is it good? Okay. So YouTube students, welcome to today's class. If you have any doubt, please let me know. Okay. In the meantime. Now, talking about quick recall. Now, let us quickly recall everything that we have talked about. Initially, we had talked about work done. Yes. So work done for constant forces. So students, can anyone tell me what is the work done for constant force? What is the formula that we got into it? Let me know. Yes, that is work done is equal to force dot displacement. Yes or no? Dot product of force and displacement. Yes or no? Where we wrote this as Fs cos theta. Yes or no? This was the first thing that we talked about. Then we jumped into variable force. Yes or no? Then we went to variable force. Yes, very good. Then in variable force, we came to know that work done can be written as integration of F dot dr. Yes. Or in terms of, let's say, x-axis, y-axis, and z-axis, if, let's say, if the direction are x direction, if there are directions, y direction, and z direction, if there are directions, so how can we write this? We can write this as fx dx plus fy dy plus fz dz, and the limit is from x1 to x2, y1 to y2, and what's our integration z1 to z2. Yes, we have talked about these things also. Later on, we tried to relate work with the what? With the energy. That was work energy theorem. Work energy theorem. What was the theorem, students? Do you remember? What was the theorem? Do you remember the theorem? What was the theorem saying? Let me know. Sweetie, let me know. And students who are attending today's class, can anyone tell me what is the work energy theorem says? Anjali, Bhumika, can anyone say? And JNV students, Chitradurga students, Yadgiri, Davangere, let me know. Yes, very good. What? The work done, we took it as what? Change in kinetic energy. Yes or no? Change in kinetic energy, or kinetic energy final minus kinetic energy initial. Difference between kinetic energy is work done. Yes, that is initial kinetic energy and final kinetic energy. Then this was for kinetic energy. Later on, we related work done by the conservative force with the potential. What was it? Do you remember? With the potential and work done by the conservative force. How did we relate it? We related with what? Change in potential energy. This is what? Change in potential energy. Delta U. U is what? Potential energy. We represent using U is equal to what, students? Minus work done by the conservative force. Yes or no? Let me know. Let me know, students. Yes. And I told you that, see, if this is a small change, if you are considering a small change, can I write this as small change in potential energy is equal to minus of small change in work done by the conservative force. Small work done. Can I write it? This is what? Small. Badari students, good evening. What? Small, like change. A small change, basically. Du a small change. This is what? Small change in potential energy is equal to what? The work done by a like a small, like due to a small let's say body, or like a small object. You can consider it. Okay. Only to represent it. I'm not. It is not the literal meaning. Okay. Is it good? So small change in potential energy is equal to small change in the work done by the conservative force. Yes or no, students? Now, students, do you remember? See, we know that work done is equal to integration of F dot dr. Yes or no? Or can I write this as, if this is small change in work done, then can I write it as F dot d? Let's say if this is x-axis, F dot dx. Yes or no?
from this we got this, yes or no? We integrated this, then we got this, yes or no? So can I write something like this? So small change in work done in x direction is equal to f dot dx. ये भी लिख सकते हैं हम लोग, है कि नहीं? So these things are important to understand the types of equilibrium. Is it good? So अभी तक जो भी मैंने समझाया वो सब सही सही से समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Let me know students. Let me know. Sweetie, Path. Okay, very good. A thumbs up is also fine. Very nice. Path, very good. Anjali, okay, nice. Nice. Dipali, very good. Very good. Okay, Chitruga students. Okay, ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡಬಹುದು. Okay, so I'm comfortable with any language if you want to speak. Okay, other than I don't know Marathi and other things and all, I know Hindi, English, Kannada, Telugu. Okay, I can understand these things. Nice. Now, okay, so do you understand so far? Everything is good? Everything is set? Pakka? Pakka na? Acha, okay, nice. Okay. Nice, nice. Okay. Now, if that is the case, then let us talk about equilibrium. Now, students, I want to ask with you, what is equilibrium? What do you think? Don't look into the image. According to you, what is equilibrium? Don't see the image. Okay. Very good, Path. Very nice. Yesterday we have talked about it, right? Yes. Very nice. Others, let me know. What is this equilibrium? Sweetie, very nice. Others, can anyone tell me? बता सकते हो क्या? चित्रगुप्त students, very good. Okay. Constant condition. Okay. Balance. Very nice. Okay. ठीक है. देखो, जब हम फिजिक्स में बात करते हैं ना, when in terms of physics, okay, what we talk about equilibrium is, what does equilibrium mean? Equilibrium means the net force, the sum of net force that is acting is zero. Tanuja, very good. Spurti, very good. Yes. Or can I say, okay, Bhavana, very nice. Or can I say, let's say if there are directions, the sum of forces acting in x direction is zero, and the sum of forces acting in y direction is zero, or the sum of forces acting on z direction is zero. These are the conditions. Yes or no? Let's say, what does it mean? Let's say if there is a body of mass m, then there is a what forces that are acting. If there are forces that are acting, that is F1, F2, F3, F4, F4. Then the sum of forces, that is F1 plus F2 plus F3 plus F4 is equal to 0. ये होता है equilibrium forces, equilibrium condition, है कि नहीं? Now, लेकिन आपको पता है कि ये equilibrium condition, ठीक है? लेकिन इसमें there are types of equilibrium. So, in order to understand these type of equilibrium, there are certain conditions. There are conditions to understand. There are conditions to understand what types of equilibrium. ठीक है? Now, before going into what the types of equilibrium, I want to talk little mathematics with you. ठीक है? एक mathematics हम बात करते हैं. देखो, मान लो आपको मैंने बोला कि du is equal to minus dwc, yes or no? और आपको पता है कि ये dw, I told you that is equal to what? Force. Let's say I'm talking in x direction. ठीक है? जो मैं बात कर रहा हूँ x डायरेक्शन में ही बात कर रहा हूँ, ठीक है? अभी के लिए x डायरेक्शन में बात कर रहा हूँ, ठीक है? मुझे ये बताओ, दिस इज इक्वल टू fx dx, ऐसे लिख सकता हूँ? यस और नो स्टूडेंट्स? सिंस dw इज इक्वल टू fx dx, कैन आई रिलेट इट ओवर हियर? अगर मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया तो du इज इक्वल टू माइनस व्हाट, fx dx हो जाएगा. सही है? अगर मैं इसको थोड़ा मैथमेटिकली थोड़ा ये करूँ, इधर उधर करूँ, तो कैन आई गेट fx इज इक्वल टू माइनस du बाई dx, ये मिल जाएगा, है कि नहीं? मैंने क्या किया, इसको यहां सब्स्टिट्यूट किया, 2 है 1 है, आई सब्स्टिट्यूट 2 in 1, फिर ये मिल गया, फिर मैंने थोड़ा इधर उधर किया, ठीक है? माइनस डी बाई डी एक्स मिल गया. ये स्टूडेंट्स, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज दिस देन? ये कुछ रिप्रेजेंट करता है क्या? व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? आपने मैथमेटिक्स में भी देखा होगा, कुछ ऐसे लिखा होगा dy बाई डी एक्स, ऐसा कुछ लिखा होगा. ये आपने ना इसमें देखा होगा, स्ट्रेट लाइंस में जब ये करते हो ना,
Very good, Suman. Okay, y is equal to mx plus c में what is this m? Students who are joined today, what is m? Very good. अच्छा, okay, Namrata, fast हो रहा है. Okay, okay. So let me know, Amrita, Namrita, कहाँ तक आपको समझ में नहीं है ये बताओ. हासितरी को स्टूडेंट्स, भूमिका वेरी गुड. नम्रता प्लीज लेट मी नो. अगर कुछ समझ में नहीं है बता देना. कहाँ आपको समझ में नहीं आया. देखो, द थिंग इज नम्रता, वी नो दैट du इज इक्वल टू माइनस dwc. ठीक है, ये पता है. ये कहाँ से आया हमें. डेल्टा u इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स. ये पूरा क्या, जो भी वर्क हो रहा है, जो भी फोर्स लग रहा है उसके. अच्छा, कुछ भी नहीं. अरे, आप have you gone through the previous lectures also, Namrata? Have you gone through the previous lectures also? But students, okay, very nice, very good. Just a second, I'm talking to Namrata once. अच्छा, तो वही बात है ना. हाँ, तो क्या, so that's the thing, ठीक है, क्योंकि ये सब previously मैंने बोल चुका हूँ. These are the things which I've told already, तो इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा. So can you do one thing? Can you please check in YouTube the work power energy different, let's say yesterday's, day before yesterday's class, or not yesterday's, day before yesterday's class, या फिर मान लो एक वीक से, अगर आप उसको देखोगे ना आपको समझ में आएगा. Is it good? Is it good? फिर भी मैं I'll try to make you understand. ठीक है, देखो, I'll try to make you understand. The thing is, okay, the thing is, this is what we got when we were talking about, no problem Namrata, we were talking about what, potential energy. ठीक है, ये हम बात कर रहे थे जब पोटेंशियल एनर्जी बात कर रहे थे. ठीक है, उससे पहले हमने काइनेटिक एनर्जी बात किया था, जब हमें क्या करना था कि जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको वर्क डन में रिलेट करना था. ठीक है, तो हमने उसको रिलेट कर लिया. फिर हमें पता चला कि इसको अगर हम स्मॉल चेंज में देख रहे हैं ना, स्मॉल क्वांटिटी में देख रहे हैं, then we'll get du is equal to minus dwc. And also we know that, see, this is what we know, work done is equal to integration of f dot dr. ठीक है, अगर मैं x डायरेक्शन में बात करूंगा ना तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं, work done is equal to f dot dx. yes, integration of fx. लेकिन since I'm talking about small change, I can write this as dw is equal to fx dx. ठीक है, ये इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें पूरा का मिल जाएगा. उसी, I took all these things and I substitute over here. ठीक है, I substituted in this first equation and I got fx is equal to minus du by dx. This is what I got here. Namrata, is it good? Now, see over here, as I said, this represents slope of what? Slope of a curve. Slope of a curve. ये अगर मान लो एक ग्राफ दिया ने, what is this curve? This curve is versus what? U versus what? Displacement. सही है, ये displacement है. अगर displacement मैंने x लिया और u is what? U is what, students? Let me know in the chat. What is u? Let me know. u क्या है? Potential है ना? Yes, very good. Potential energy. देखो, हाँ, very nice. Now students, if a graph is given, how do you find the slope? याद है मैथमेटिक्स में कैसे करते थे? When, if there is a curve, if there is a curve, okay, and you know you have to find the slope. How do you find it? कैसे फाइंड आउट करता? अगर मान लो मैंने ग्राफ दिया, ठीक है, कुछ और नहीं दिया, वो आप कैसे कर सकते हो? याद है? How do you find it? You what? Draw a tangent to the curve. ठीक है, tangent to the curve. ठीक है, मान लो ये कर्व है u वर्सेस व्हाट? डिस्प्लेसमेंट x. मान लो मुझे एक पॉइंट इधर है, ठीक है, मुझे यहाँ फाइंड आउट करना है, इधर फाइंड आउट करना है. ठीक है, इसका स्लोप फाइंड आउट करना है. कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ? आई कैन ड्रॉ अ टैंजेंट टू दिस कर्व. ऐसा नो, एक टैंजेंट फाइंड आउट ड्रॉ किया and the angle that is made by this tangent is this angle, that is theta, and this is the slope that we get. Yes or no? Very nice. From here we find what? Tan theta, and the value that we get, will represent what? The slope of the
of the point that we are finding. Yes or no, students? Let me know in the chat. यहां तक सही है? यहां तक सही है? Yes or no? Very good. हाँ, अब देखो यहां तक मैंने सब कुछ कर दिया कि मैंने क्या बोला कि आपको टेंजेंट फाइंड आउट करना था। मुझे ये बताओ इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या था? व्हाट इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम? कि आपका जो भी फोर्स होगा वो जीरो होगा। यस और नो? तो कैन आई से आई हैव fx is equal to minus du by dx, or can I say that minus du by dx equal to zero जहां होगा, ठीक है, वहां वहां क्या होगा? कंडीशन इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन, yes or no, students? Because we know that the fx should be zero for equilibrium. Yes or no? Yes, very good. Amrita, very nice. Others, let me know in the chat. Okay. Janvi, Ballari, Chittadurga, Davangere, Yadgiri students, let me know. रुतुराज, साक्षी, बहुत लोग हैं। बताओ बताओ, समझ में आ रहा है? तीर्थ, अंजलि, वेरी नाइस। ओके, स्वीटी, वेरी गुड। पार्थ, वेयर इज अवर पार्थ? यस, पार्थ इज आल्सो हियर। यस, वेरी गुड। नाउ मुझे ये बताओ, अगर ये ग्राफ है u, सॉरी दिस इज योर ग्राफ u वर्सेस डिस्प्लेसमेंट x, इस ग्राफ में कहां कहां आपका जो du by dx जीरो होगा? When will this slope, देखो ये स्लोप है, आपको भी पता है, मुझे ये बताओ स्लोप जीरो कहां कहां होगा इस ग्राफ में? कैन आई से यहाँ पॉइंट ए, यहाँ पॉइंट बी और यहाँ पॉइंट सी में आपका जो भी स्लोप होगा ना वो जीरो होगा। मतलब यहाँ du by dx इक्वल टू जीरो होगा, यहाँ du by dx जीरो होगा, सही है, और यहाँ भी आपका du by dx जीरो होगा, सही है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने यहाँ टेंजेंट ड्रॉ किया, क्योंकि यहाँ मैंने अगर टेंजेंट ड्रॉ किया, व्हाट इज द एंगल इट इज मेकिंग with the axis? Let's say with the x axis or the axis that is in the displacement. Very nice, very good. क्योंकि यहाँ देखो जो भी एंगल, देखो एंगल था, अगर मान लो इस पॉइंट में ये एंगल था, ठीक है, ये था, दिस वाज थीटा बेसिकली, लेकिन इस ग्राफ के लिए, इस टेंजेंट के लिए ये एंगल ही नहीं बन रहा, एंगल थीटा इज इक्वल टू जीरो है, थीटा इक्वल टू जीरो है। पार्थ, who has gone? अबे अब अच्छा, ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ओके। नाउ यहाँ तक समझ में आया? सो दिस इज द कंडीशंस फॉर व्हाट? इक्विलिब्रियम। हमने क्या किया देखो, हमें पता था कि सो व्हाट वी डिड, एक जिस्ट दे रहा हूँ, ठीक है, हमें पता था कि अगर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन मानते हैं तो उसमें फोर्स जीरो होने चाहिए। अब हमने क्या किया, उसी को रिलेट किया पोटेंशियल एनर्जी से। अब हमें पता चला कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो हो रहा है ना विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, अगर वो जीरो आ गया, वो जीरो आ गया, तो हम बोलेंगे वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, सही है। वेरी गुड, यस एक्सेप्ट है। लेट मी नो स्टूडेंट, लेट मी नो इन द chat. Is it good? Is it good? Yes, JNV students, every JNV students, please let me know. Okay, very nice. Yadgiri students, Chitradurga students, very good. Samruddhi, Harshada, let me know. Harshada, is it clear? Very good. Now, if that is the case, अभी तक क्या क्या मिला हमें? हमें मिला, अगर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन मानना चाहते हैं, if the body is in equilibrium, तो हम क्या बोलेंगे कि माइनस du by dx जीरो होनी चाहिए। ये हमें पता चला, सही है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, वेरी नाइस, ये आपको पता होनी चाहिए। हमने सिर्फ रिलेट किया, कुछ और नहीं किया। अब देखो, when we are talking about equilibrium, there are types of equilibrium, ठीक है, there are three types of equilibrium that it comes into picture that we'll be talking about. That is stable, ठीक है, unstable and what? Unstable and neutral. Very good. देखो ये जो तीनों कंडीशन है ना, ये तीनों इक्विलिब्रियम है ना, इसमें जो du by dx है वो जीरो होगा, ऑब्वियसली जीरो होगा ना। क्यों? क्यों? क्योंकि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन है। लेकिन हमें एक और कंडीशन फाइंड आउट करना है कि मान लो देखो, आपके पता चला यहाँ जीरो है,
यहाँ 0 है, यहाँ 0, सही है। लेकिन हमें मान लो एक एग्जाम में न्यूमेरिकल देते हैं, सही है, उस न्यूमेरिकल में वी हैव टू फाइंड आउट which is stable equilibrium, which is unstable equilibrium, which is neutral equilibrium. Yes, so there is a different condition, there is a different condition to satisfy. ठीक है, डिफरेंट कंडीशन टू सेटिस्फाई। उस कंडीशन को बात करेंगे जब हम स्टेबल अनस्टेबल न्यूट्रल को देखेंगे। सही है, यहां तक सही है। एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स मुझे ये बताओ, देखो आपको पता चला यहाँ du by dx 0 है, यहाँ du by dx 0 है, यहाँ du by dx 0 है। मुझे ये बताओ what is the potential energy over here? Is it minimum or maximum potential energy? What is the potential energy at A point, at B point, at C point? C में A point में क्या होगा? Very good. That is minimum potential energy. सही है? हाँ, यहाँ B point में क्या होगा? What at B? Very good. Potential energy is maximum. Very nice. Very good. Very good. Okay. Now we'll be talking about what is potential energy in C. Don't worry. We'll be talking about. ठीक है? अब पता चला, अब देखो हमें क्या क्या फाइंड आउट, हमें क्या क्या पता चला? हमें पता चला du by dx माइनस 0 होने चाहिए। फिर हमें पता चला एक एक जगह पे u पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है, एक जगह पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है। सही है। अब हम इस तीनों कंडीशन को यूज करके we'll define what is stable equilibrium, what is unstable equilibrium, what neutral equilibrium. Is it good? Yes. Now that is the case. Okay. Now what is this? What types of equilibrium? As I said, there are three types. One is stable, one is unstable, one is neutral. अब मैंने बोला कि एक पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम है, एक मैक्सिमम है, सही है। तो कैन एनीवन टेल मी, yesterday we have gone through is, yes, what is the condition for stable equilibrium? Students, this is a stable equilibrium. What will be the potential energy here? What is the potential energy here? Yes, potential energy will be minimum. ठीक है, ये condition है. These are conditions. ठीक है, very good. Okay, what will happen to potential energy in unstable equilibrium? Potential energy will be what? Maximum. सही है? Yes, very nice student. Is it good? Yes. Now over here students, मैं फिर से जाना चाहता हूं, यहाँ मुझे ये बताओ ये वाला पॉइंट ए क्या होगा? स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा? स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा? हाँ भाई, स्टेबल होगा क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो स्टेबल है। और यहाँ क्या होगा? यहाँ क्या होगा? ये यहाँ इज इट अनस्टेबल और स्टेबल? वेरी गुड, अनस्टेबल। क्या? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। वेरी गुड, वेरी नाइस। हाँ, सही है, सब कुछ सही है। वेरी नाइस अंजलि, भावना, वेरी नाइस। नम्रता, आर यू देयर? समझ में आ रहा है आपको? ये ऊपर से जा रहा है, बाउंसर हो रहा है? लेट मी नो। कृष्णा लेट मी नो, दोषी लेट मी नो, मृदुला लेट मी नो, भावना, सहाना। एंड या मेक श्योर दैट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड यू कैन स्टॉप मी एट एनी टाइम। ठीक है, वेरी गुड। ये देखो जो रेगुलरली आ रहे हैं ना, आप लोग बहुत नए हो इस क्लास में, जो रेगुलर आता है, I mean like the JNV, Ballari, Bagalkot, Chitraduga students, then Parth, Sweetie, Tiv, yes, Suman, and also there are others also. Who is it? Who else comes? ठीक है, so these students know that they can stop me at any time. ठीक है, so I'm telling you again that you can stop me any time if you don't understand. Okay, it's my pleasure to explain you again and make sure that you understand. Is it good? Nice. Now talking about neutral equilibrium. In neutral equilibrium, the condition would be what? Yes, Chitraduga students, the condition would be what? जीरो नहीं होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी होगा ना वो कांस्टेंट होगा, नॉट बोथ, वो कांस्टेंट होगा। ओके, इज इट गुड? द पोटेंशियल एनर्जी विल बी कांस्टेंट, मतलब अगर मान लो एक वैल्यू आ गया 4 तो थोड़ी देर के बाद 4 ही रहेगा। ठीक है, इसका मतलब कांस्टेंट है। इज इट गुड?
Hello students, are you able to hear me? Sorry, power went off. Please let me know. थोड़ा unstable रहेगा internet. Please let me know. So my video will be off too. Students, let me know. Is my audio clear? Everyone has to answer it. Okay. Please let me know. Okay. Good. There is no disturbance, right? There is no delay. There is no disturbance. Okay. Very good. Now talking about what? Talking about stable equilibrium. As I said, what is the condition for stable equilibrium? You know that एक equilibrium condition है, वो क्या है? What is the equilibrium condition? आपको पता है कि जो माइनस डी यू बाई डी एक्स है वो जीरो होनी चाहिए. ये तो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, है कि नहीं? So this is the condition that has to be satisfied no matter what, whichever what equilibrium you want to talk about. Now next, very good. And the potential energy will be what? The potential energy will be minimum. The potential energy will be minimum. ये जो दो condition, ठीक है? Now let us try to understand the stable equilibrium. मान लो यहाँ पॉइंट O पे मैंने एक बॉल रखा है, ठीक है? ये एक बॉल है, ये एक मेरा बॉल है. Now I will apply a small displacement. ठीक है? मैंने क्या किया? एक small displacement अप्लाई किया. तो मुझे ये बताओ, अगर मैंने इसको स्मॉल थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, तो थोड़ा मान लो यहाँ डिस्प्लेस किया, तो ये ऊपर आ जाएगा, है कि नहीं? और फिर से नीचे आ जाएगा. Yes or no students? ज्यादा नहीं कर रहा हूँ. I mean a very slight displacement. Very yes or no? Very good. Yes. So what is happening over here? Whenever you apply a small displacement over here, does the ball will come back to its original position, है कि नहीं? Original position. अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा ना, तो क्या होगा कि आपका जो भी बॉल है वो विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. इज इट गुड? यस और नो स्टूडेंट्स? इज इट क्लियर? So whenever you are applying a small displacement, the ball will come back to the same position. Now, देखो ये अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो ना, if you want to understand numericals when you are trying to solve numericals, you have to find a conditions. There are certain conditions that are satisfied. Conditions has to satisfy in order to call it what? Stable equilibrium. Stable equilibrium, है कि नहीं? वो कंडीशन क्या होगा? देखो आपको पता है कि आप माइनस डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, ठीक है? ये कंडीशन आपको आई मीन यू हैव टू पुट दिस कंडीशन. नेक्स्ट इज दैट द कंडीशन इज दैट व्हेन यू डबल डिफरेंशिएट इट, दैट इज डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर का जो भी वैल्यू आएगा ना, वो ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए. If it is greater than zero, then we call it to be a stable equilibrium. Is it good? Is it good, students? Please let me know. Students, let me know. Yes. ये कैसा आया? क्योंकि हमें पता है fx is equal to minus du by dx, और आपको पता है कि जो भी ये इक्विलिब्रियम में फोर्स क्या होगा? fx जीरो होगा. yes. Okay, Anjali, just a second. Chitraduga students, just a second. I'll tell you what are the conditions. See, for equilibrium conditions, I'll explain it again. We know that what? Minus du by dx should be zero. This is one condition that has to be satisfied. And I told you that the second condition, it to be called to be a stable equilibrium, is what? The potential energy should be minimum. Now, देखो जैसे मैंने बोला था, आपके पास अगर ग्राफ है, आप ग्राफ बोल के बता सकते हो कि कौन सा ये वाला अनस्टेबल है या ये वाला स्टेबल है, आप बता सकते हो. लेकिन जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना, देन वी हैव टू फाइंड अ कंडीशंस, टू टेल वेदर, लेट्स से इक्वेशन इज गिवन, लेट्स से f इज इक्वल टू जो भी फोर्स दिया है, ठीक है, जो भी एक वैल्यू दिया है, एनी फोर्स इज गिवन, ठीक है. वी नीड टू फाइंड वेदर इट्स अ स्टेबल, इट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और लेट्स से पोटेंशियल कुछ दिया है, ठीक है. सो व्हाट इज द कंडीशन? आप कैसे फाइंड आउट करोगे?
बताओ मुझे, चित्र स्टूडेंट्स, हाउ विल यू फाइंड इट? If there is a equation is given, how can you find it whether it is in stable equilibrium or unstable equilibrium? There should be some conditions, right? Yes or no, Chitragur students? Let me know in the chat. Yes, that condition is what we do here. This is the condition that has to be satisfied in order to understand whether it's a stable or a unstable equilibrium. Is it good? हाँ, क्योंकि जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, देखो जब मैं डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूँ, व्हाट इज दैट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट? इट इज कमिंग बैक टू इट्स व्हाट, कमिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, है कि नहीं? यस और नो? यस। अंजलि, इज इट क्लियर टिल नाउ? आपको डाउट है कुछ? इज देयर एनी डाउट? लेट मी नो, लेट मी नो स्टूडेंट्स, लेट मी नो। Yes or no, please. Okay, okay. Acha, Anjali, like you have a doubt or you are saying that you didn't understand it? Downgrade students. Okay, good, good. Path, let me know. देखो देखो देखो, हाँ, मधुश्री, विल डू वन थिंग, ओके, विल डू वन थिंग, विल ट्राई टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ठीक है? हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है? लेट अस ट्राई टू, ये देखो, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, लेट अस ट्राई टू सॉल्व अ प्रॉब्लम नाउ, ठीक है? मान लो, ठीक है, प्रॉब्लम क्या है? आई विल ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, then you will understand what exactly I'm telling. Okay, now the problem says this is a numerical, ठीक है? आपके पास एक न्यूमेरिकल है, आपको दिया है द पोटेंशियल एनर्जी U is equal to x square minus x, ठीक है? Now the question says find the position of equilibrium, find the position of equilibrium and type of equilibrium सही है? Okay, so what the question says, आपको एक पोटेंशियल दिया है, आपको फाइंड आउट करना है द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। चित्रगुप्त स्टूडेंट्स, सैटिस्फाइंग व्हाट कंडीशन? आपको कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करना है? Just a second, let's solve this problem, then everything will be clear. Okay, now how to solve this? See, the thing is, it is given that potential energy is equal to x square minus 8x, सही है? अब मुझे ये बताओ, इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या था? व्हाट वाज द कंडीशन इट टू बी इन इक्विलिब्रियम? कौन सा कंडीशन था? आपको बताया था कि माइनस डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू 0 होनी चाहिए, है कि नहीं? यस और नो? नाउ इफ आई ट्राई टू डिफरेंशिएट दिस, व्हाट विल आई गेट? माइनस ऑफ 2x minus 8 equal to 0. Yes or no? From here, will I get 2x minus 8 equal to 0 and 2x is equal to 8 and x is equal to what? 8 by 2, which is equal to 4, or x is equal to 4. Yes. Can I say at this position, at this value or position, at this value or position, what? The body is in equilibrium. The body is in equilibrium. बोल सकता हूं मैं? ऐसे बोल सकता हूं ना? Yes or no? Everyone. अंजलि, चित्रदुर्गा स्टूडेंट्स, स्वीटी, यस पार्थ, लेट मी नो। हाँ, देखो क्या क्वेश्चन था? पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सही है? अभी हमें फाइंड आउट करना है कि टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है। देखो, आपको ये दिया है और ये दिया है, हमने फाइंड आउट किया ये वाला वैल्यू भी, सो वी नीड टू फाइंड व्हाट इज दी व्हाट। यस, वेरी गुड। हाउ डू यू फाइंड द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम? मैंने बोला अगर स्टेबल है, व्हाट वाज द कंडीशन स्टूडेंट्स? डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0। देखो, आपको इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है कि नहीं? यहां आपने एक बार डिफरेंशिएट किया, वो क्या आया? 2x minus 8. So I'll differentiate it again. 2x minus 8 को अगर मैंने फिर से डिफरेंशिएट किया तो क्या वैल्यू आएगा? 2 आएगा, है कि नहीं?
Let me know students, is it greater than 0? ये greater than 0 है कि नहीं? So what will be the equilibrium now? Will it be stable equilibrium? Will it be stable equilibrium? Yeah, yes or no? Very good, very nice, very nice. हाँ, अब मुझे ये बताओ, जो भी डाउट पूछ रहे थे चित्रदुर्ग स्टूडेंट्स एंड मधुश्री, लेट मी नो. Madhushri and Chittradurga students, is it clear or not? Yes, Sakshi, very nice. Madhushri, why we got different x value? कहाँ different x value आ गया अभी? Where did we get a different x value? Very good, Bhavana. Madhushri, please let me know. कौन से step में? देखो, ये वाला first, this is first step, second step, third step, fourth step, ठीक है? ये वाला fifth है, ये वाला sixth है, ये वाला seventh है. मुझे ये बताओ, कहाँ मधुश्री, आपको कहाँ डाउट है, कौन सी स्टेप में डाउट है? यस, वेरी गुड, वेरी नाइस, फोर्थ में. ठीक है, देखो यहां आपको, जब आपने इसको देखो, ये कंडीशन था इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए, है कि नहीं? अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया 2x - 8 आ गया, सो ये आ गया 2x - 8 = 0 एंड यू गेट, इसको मैंने इधर लाया 2x = 8 एंड x = 8/2 विच इज इक्वल टू 4. मतलब क्या है कि जब x = 4 है, 4 ही है ना, 4 ही आया यहाँ, जब x = 4 होगा ना, तब उस पोजीशन पे क्या होगा, वो बॉडी जो भी है उसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा. मधुश्री, इज इट गुड? लेट्स डू वन थिंग मधुश्री, अभी तक अगर क्लियर नहीं है ना, स्टे आफ्टर द क्लास, आई विल क्लियर योर डाउट. इज इट गुड? आई विल मेक श्योर दैट यू अनम्यूट योरसेल्फ, फिर आप पूछ सकते हो. इज इट गुड? यस. तो सबको समझ में आया क्या? स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? एक कंडीशन ये वाला -du/dx = 0 and the potential energy should be minimum. Yes. And what? The d square, the double differentiation, when we do it, it should be greater than 0. Is it good? ये आपने देखा होगा, मिनिमा और मैक्सिमम कंडीशन होगा इसमें मैथमेटिक्स में. You have already gone through when what minima and maxima, ये वाला कंडीशन मैथमेटिक्स में आता है. What about symbol? Second step. What is the symbol? I didn't get you. Na. Sign. How can it be minus? How can it be minus? Let me know. देखो, this is outside. The minus is outside of this. तो minus is equal to 0 आ रहा है ना, तो वो minus चला जाएगा ना. The minus will what? Will get cancelled out. Yes or no? मुझे ये बताओ, ये मैथमेटिक्स है, ठीक है? -2x × x - 4 अगर ऐसा है तो आप लिखोगे ना, तो x = 0 लिखोगे डायरेक्टली. ये वाला -0 लिखोगे नहीं ना? स्टूडेंट्स, Ballari students, let me know. Let me know in the chat. Okay, Ballari students. Yes. Okay. Good. Very nice. Okay. Now if that is the case, now let us talk about unstable equilibrium. देखो, जो पहला कंडीशन है वो तो सेम है, क्या है? -du/dx should be 0. ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. सेकेंड कंडीशन इज पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा स्टूडेंट्स? मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा? लेट मी नो, जल्दी लेट मी नो. वेरी गुड, इट शुड बी मैक्सिमम. यस और नो? Now, what does it mean? Let us try to understand. देखो, ये क्या है? ये कटोरी है ना, ये वाला एक कटोरी है कि नहीं? मैंने यहाँ एक बॉल रखा. वेरी गुड, वेरी नाइस ऋतुजा. यहाँ एक बॉल रखा, ये एक बॉल है. ये बताओ, अगर मैंने यहाँ इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, थोड़ा सा, ये नीचे जाएगा या ऊपर आएगा फिर से? Will it go down or will it come back to the same position? Very good. हाँ, very good. So it will go down. मतलब कहा, ये नीचे जाएगा फिर ऊपर ही नहीं आएगा ना. तो आपको अब पता चला कि अनस्टेबल कंडीशन क्या है, स्टेबल कंडीशन क्या है, पता चला. अभी अनस्टेबल में क्या होगा? अगर मान लो हाँ यहाँ आ जाएगा ना. वेरी गुड संजना, वेरी नाइस. सो व्हाट विल हैपन? इट विल जस्ट फॉल डाउन. लेकिन स्टेबल में क्या होता है? इट विल कम बैक टू इट्स पोजीशन. यस और नो? वेरी नाइस. नाउ
As I said, there is a third condition that has to be satisfied. Students, I told you that what you need to have the double differentiation, that is d square u by dx square. इसको दो बार मैंने डिफरेंशिएट किया, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? अगर अगर यहाँ स्टेबल में इट शुड बी, एक मिनट रुको, स्टेबल में इट शुड बी ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम में डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0. हाँ, वेरी गुड. सो अनस्टेबल में क्या होगा? क्या होगा? शुड बी लेस देन 0. यस और नो? तो इसका मतलब क्या है? इसका जो वैल्यू आएगा ना, ये वैल्यू नेगेटिव होगा. बस उसमें क्या आता? वैल्यू पॉजिटिव आ रहा था. वेरी नाइस, वेरी गुड स्टूडेंट्स. अब पता चला? यस और नो स्टूडेंट्स? Let me know what are the conditions. Yes, very good. Ha, very nice. Okay, is there any doubt? Any students having any doubt? Let me know. Madhushri, have you got any doubt? Let me know in the chat. Yes, okay, good, very nice. Ha. Now let us talk about, okay, we already talked about what are the conditions. Conditions हमें होनी चाहिए d square u by dx square क्या होनी चाहिए? नेगेटिव होनी चाहिए. ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, नेगेटिव. वेरी गुड, नाइस. नाउ टॉकिंग अबाउट न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. ये अगर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होनी चाहिए? देखो कंडीशन सेम है. क्या कंडीशन सेम है? कि माइनस डी यू बाई डी एक्स जो भी आएगा वो 0 आएगा, है कि नहीं? लेकिन देखो इसका मतलब क्या है? मान लो मैंने एक सरफेस लिया, ठीक है, एक सरफेस लिया, वेरी नाइस, एक सरफेस लिया और एक बॉल लिया. लेट मी नो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस? व्हाट आर द फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन दिस? वन इज नॉर्मल फोर्स, वन इज व्हाट? mg. मुझे ये बताओ, ये नेट फोर्स एक्टिंग क्या होगा? नेट फोर्स 0 होगा ना? क्यों? क्यों? नॉर्मल फोर्स विल गेट कैंसल आउट विद द mg फोर्स. यस और नो? वेरी गुड. मैंने क्या किया कि इसका एक पोटेंशियल है, ठीक है, एक पोटेंशियल है, जो भी होगा इसका पोटेंशियल है, सम वैल्यू. मैंने इसको अभी आई विल स्लाइटली डिस्प्लेस इट. ओके, आई विल स्लाइटली डिस्प्लेस इट, स्लाइटली डिस्प्लेस इट. तो ये कहाँ आ गया? यहाँ आ गया. यस और नो? एंड नाउ इसका जो फोर्स है, व्हाट इज द फोर्स दैट इज एक्टिंग? दैट इज नॉर्मल फोर्स एंड mg. फिर से इसका नेट फोर्स 0 होगा. यस और नो? वेरी गुड. जो भी नेट फोर्स होगा फिर से 0 होगा. मुझे ये बताओ, इज देयर एनी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? इज देयर एनी चेंज? यहाँ कुछ अगर वैल्यू था, अगर a था तो यहाँ भी a ही होगा ना? यस और नो? सो देयर वाज नो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. यस, यस, वेरी गुड. सो व्हाट इज इट? वेरी नाइस, वेरी गुड. हाँ, तो आपको पता है कि यहाँ जो ये कंडीशन क्या आएगा? इसमें आपको पता है ये वाला 0 होनी चाहिए. एंड द सेकंड कंडीशन इज डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर वैल्यू क्या आ जाएगा? लेट मी नो स्टूडेंट्स, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? इट शुड बी 0. ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होगा, देन वी कॉल इट अ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. इज इट गुड स्टूडेंट्स? लेट मी नो इन द चैट. यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? Yes, okay, very good, very nice. Now, okay, sweetie, that's good. Okay, Sakshi, nice. Now, if that is the case, so let's do one thing. Let us write all the conditions for stable, for unstable and neutral equilibrium. ठीक है? जो भी condition हम जानते हैं अभी, हम वो लिखेंगे. So in the meantime, what will I do? I'll launch the NPS scope. Please answer the NPS poll also. Students, every student has to answer the NPS poll. Have launched the NPS poll. आपके स्क्रीन में अभी होगा. Okay. Yes. Okay. Is there any doubt? Okay. Now students, मुझे ये बताओ, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या क्या कंडीशन था? व्हाट आर द कंडीशंस फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम? बताओ. एक कंडीशन था माइनस डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0. और कैन आई से द स्लोप ऑफ u वर्सेस x curve
शुड बी जीरो, ये कंडीशन था, सही है। और एक को कंडीशन था पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, मिनिमम, वेरी गुड। और एक और कंडीशन क्या है कि डी स्क्वायर यू बाई डी slope of u curve, okay, and you know that this value is what value is you. अभी अभी आ रही है, सॉरी, ओके, इंटरनेट इशू है क्योंकि पावर नहीं है। यस, अभी आवाज आ रही है, लेट मी नो। अच्छा ठीक है, ओके, गुड गुड गुड। सो एवरी स्टूडेंट प्लीज आंसर द एनपीएस, ठीक है, एवरीवन हैज टू आंसर द एनपीएस, वेरी गुड, वेरी नाइस। नाउ पक्का आ रही है ना, ओके, वेरी नाइस। एंड नाउ व्हाट आर द कंडीशंस फॉर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम? देखो, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कंडीशन सेम है, माइनस डी यू बाई डी एक्स, ये तो स्लोप जीरो होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जो आपकी कंडीशन क्या है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा ना, बेसिकली इधर पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होगा। एंड एक और कंडीशन क्या है कि डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट्स, विच इज इक्वल टू जीरो। यस और वेरी गुड, वेरी गुड चित्रदुर्ग स्टूडेंट्स, वेरी गुड, वेरी नाइस, सही है, गुड गुड। अच्छा ठीक है, ओके, यस। अगर ऐसी बात है मुझे बताओ कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ, यहाँ तक कुछ डाउट है कि नहीं, बताओ। लेट मी नो स्टूडेंट्स, एंड एवरीवन हैज टू आंसर द एनपीएस, ओके, क्लियर है, सब बताओ, सब बताओ, सुमन, वेरी गुड, अंडरस्टूड, सही है। ओके, ओके, देयर इज नो, भूमिका यू आर सेइंग देयर इज नो डाउट। अच्छा, ओके, वेरी गुड, ओके, that is the case, that is the case students, then let us go into numericals, रेडी हो न्यूमेरिकल करने में? एक न्यूमेरिकल तो हमने कर लिया, ठीक है, अब एक और न्यूमेरिकल करते हैं। उस न्यूमेरिकल में क्या होगा, ठीक है, यू हैव टू फाइंड, ठीक है, यू हैव टू फाइंड, सिमिलर है, यू हैव टू फाइंड व्हाट, द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। लेकिन आपको जो इक्विलिब्रियम दिया है ना वो u इज इक्वल टू 12x माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, व्हाट इज इट, 12x, जस्ट अ सेकंड, आई विल राइट इट अगेन, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं ना, समझ में आनी चाहिए आप लोगों को, समझ में, 12x माइनस एक्स क्यूब। मुझे ये बताओ द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम जो आ रहा है, लेट मी नो स्टूडेंट्स, लेट मी नो इन द चैट, आई एम गिविंग, आपके पास 3 मिनट है, यस, द टाइमर इज रनिंग, प्लीज लेट मी नो। हेलो सानू, इज इट क्लियर, इज एवरीथिंग क्लियर टिल नाउ? हाँ चित्रदुर्ग स्टूडेंट्स, हाँ, वेरी गुड। I guess there are two conditions that arrives. Please let me know all the conditions.
तो ये बताओ कौन सी पोजीशन पे और कौन सी वैल्यू पे, पोजीशन मतलब वैल्यू होता है, ठीक है, कौन सी वैल्यू पे आपका ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इक्विलिब्रियम में है या फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल, अनस्टेबल या न्यूट्रल. Students, is there any doubt? Let me know. And yeah, 6 students hasn't answered the NPS poll. Please answer in this. Your feedback is very crucial. Okay. Okay. Very nice. Okay. Good students, check your answer again. Okay. Okay, let's do one thing. Let us try to solve it. Okay, let us try to solve it as we have this as a homework, but I'll tell you how to solve it. Okay, I'll tell you how to solve it. Let us stop the timer. ठीक है, देखो आपके पास दिया है the thing that is given is potential energy. How to solve this? See, the first thing is, you know that minus du by dx should be equal to 0 in order to call it a equilibrium condition. Yes or no? Now, if that is the case, can I write minus of d by dx of the trouble, ठीक है? फिर से ये नेटवर्क इशू हो रहा है. Okay, now, are you able to hear me? Let me know in the chat. Just a yes. Just a yes. Okay. Okay, you are not able to hear me. Hello, students. Yes. Okay. You are not able to hear me, or you are able to hear me. Acha, no. Okay. So there is disturbance. Okay. Okay, students. Let's do one thing. As there is issue, let us solve this. Solve this in next class. Is it good? Let us solve this in next class. Yes or no? Is it good? Yes or no? Let me know, students. Okay, good. Very nice. Okay, yes. If that is the case, students, let's do one thing. Let us go to the summary of today's session. Okay. Yes, students. Okay. Take care. So just let us go through the summary of today's session. What we have understood today. We have understood what is the condition for equilibrium. What is the condition for equilibrium? Okay, but students, give me 2 minutes. I'll just wrap up the class. Then I'll tell you the answer. Okay. Now, the condition for equilibrium is what? We know that the net force should be 0, Fx should be 0, or the net force acting, it should be 0. Now, we related this with what? Potential energy, and we came to know minus du by dx is equal to 0. This is basically what? Slope of u versus curve, u versus x curve, that is x is displacement. Then we came to know that there is what? Stable, unstable, and neutral equilibrium. We came to know that the condition for stable equilibrium is what? D square u by dx square should be greater than 0. Here it should be d square u by dx square should be less than 0. And here for neutral it should be d square u by dx square. Dx square will be what? 0. These were the conditions that we saw, and also we saw a numerical where we what proved that the potential energy is what? Stable. It is in stable equilibrium. Yes or no, students? Let me know. Yes. Okay. So I'm ending the poll also. NPS poll also, I'm ending the poll. So students, thank you for attending today's class.
So we'll do one thing in next class. In tomorrow's class, we'll be solving numerical based on stable, unstable, and neutral equilibrium. We will see how the questions arise. Okay. Now, if that is the case, if you have any doubt, please stay in the class and you can clear the doubt. YouTube live students, thank you for attending today's class. Okay. Take care. Bye bye. See ya. Yes. Okay. So who was asking? Badari students. Badari students, you want to know the answer? What is the answer for this? Just a second. I'll tell the answer. Yes.